The portrait of Hallowmore Hall, Hallowmore Hall की तस्वीर. Long ago, nestled in the misty hills of Devonshire, stood an ancient estate known as Hallowmore Hall. कई साल पहले डिवनशायर की धंध भरी पहाड़ियों में एक कदीम हवेली थी जिसे Hallowmore Hall कहा जाता था. Time had chipped away at its glory, leaving behind cracked corridors, faded rugs, and the scent of old wood. वक्त ने इसकी शान और शौकत को खोखला कर दिया था. सिर्फ टूटे हुए राहदारियां, पुराने कालीन और लकड़ी की बासी खुशबू बाकी रह गई थी. The villagers whispered tales of strange happenings in the mansion, but none dared venture close, except for one. दिहाती इस हवेली में होने वाले अजीब वाक़ात की कहानियां सरगोशियों में सुनाते थे, लेकिन कोई भी इसके करीब जाने की हिम्मत न करता, सवाए एक के. Clara Moreau, a curious art history student, had inherited Hallowmore Hall from a distant ancestor she had never met. क्लारा मोरो, जो फ़नून लतीफ़ा की एक तजस्सुस भरी तालिबा थी, ने यह हवेली एक दूर के रिश्तेदार से विरासत में पाई थी जिसे वो कभी मिली भी नहीं थी. Her professors encouraged her to unravel its mysteries, especially since the estate housed a collection of rare paintings, some believed to be lost to time. इसके प्रोफेसरों ने इसे इसके राजों को दरियाफ्त करने का मशवरा दिया, ख़ास तौर पर इसलिए कि इस हवेली में नायाब तस्वीरों का एक ज़ख़ीरा था जिनमें से कुछ वक़्त की नज़र हो चुकी समझा जाता था. Upon arriving, Clara felt an eerie stillness in the air. वहाँ पहुँचते ही क्लारा ने फ़ज़ा में एक अजीब सा सुकूत महसूस किया. Each corridor echoed her steps like distant whispers. हर राहदारी में इसके कदमों की आवाज़ दूर की सरगोशियों की तरह गूंजती थी. The grand foyer was decorated with portraits, men and women in stiff clothing, their expressions frozen forever. मरकज़ी हाल में तस्वीरें आवीज़ां थीं, मर्द और औरतें सख्त लिबासों में, उनके चेहरे हमेशा के लिए एक जैसे जमे हुए. But one portrait caught her eye, a young woman with piercing eyes that seemed to follow Clara as she moved. लेकिन एक तस्वीर ने इसकी तवज्जो खींच ली, एक नौजवान औरत की जिसकी तेज नज़रों ने क्लारा को जैसे देखना शुरू कर दिया हो. The nameplate read, Lady Evangeline Moreau, 1834. नाम की तख्ती पर लिखा था, Lady Evangeline Moreau, 1834. There was something peculiar about the painting. इस तस्वीर में कुछ खास बात थी. The colors were too vivid for its age. रंग इसकी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा ताज़ा थे. The eyes, almost alive. आंखें जैसे जिंदा हों. And what troubled Clara most was this. Lady Evangeline looked exactly like her. और जो चीज़ क्लारा को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि Lady Evangeline बिल्कुल इस जैसी लगती थी. Night fell fast at Hallowmore. Hallowmore पर रात जल्दी छा गई. Candles flickered in the drafty halls. हालों में जलती मोम बत्तियां हुआ से लर्जने लगें. Clara stayed up studying old letters and documents she had found in a concealed drawer behind the library shelves. Clara रात गए तक पुराने खतूत और दस्तावेज़ात पढ़ती रही जो इसे लाइब्रेरी की अलमारी के पीछे छुपी एक दराज से मिले थे. They told of Evangeline, a woman shunned for her beliefs, an artist, a scholar, and perhaps something more. इनमें इवांजेलिन का जिक्र था जो अपने नज़रियात की वजह से नज़रअंदाज की गई थी, एक फनकार, एक महक्क़िक़ और शायद कुछ और भी. As midnight approached, Clara heard a faint knock. Not on the door, but behind the painting. जब आधी रात का वक्त करीब आया, क्लारा ने एक हल्की सी दस्तक सुनी. दरवाजे पर नहीं, बल्कि इस तस्वीर के पीछे. With her heart pounding, she removed the portrait from the wall. दिल की धड़कन तेज होती गई और इसने तस्वीर को दीवार से उतार लिया. A silhouette of a door was etched into the wall behind it. दीवार पर एक दरवाजे का खाका बना हुआ था. She pushed gently. इसने आहिस्ता से धकेला. It creaked open to reveal a hidden staircase spiraling downward. दरवाजा चरचराता हुआ खुला और नीचे जाती हुई एक खफिया सीढ़ी नजर आई. Each step echoed as she descended into a forgotten cellar filled with dust, canvases, and journals. हर कदम की आवाज़ गूंजती रही जब वो एक भूली हुई तहखाने में उतरी जो धूल, तस्वीरों और डायरियों से भरा था.
One canvas stood alone, covered by a tattered sheet. एक कैनोस अलग थलग खड़ा था जिस पर एक पुरानी चादर पड़ी थी. Clara pulled it off. Clara ने वो चादर हटा दी. It was another portrait, unfinished. वो एक और तस्वीर थी, नामुकम्मल. The face was hers. चेहरा उसका अपना था. Suddenly, the air grew cold. अचानक फजा ठंडी हो गई. The flicker of her candle dimmed. इसकी मोमबत्ती की रोशनी मुधम हो गई. She turned, expecting to see shadows. इसने मुड़कर देखा जैसे कुछ साए दिखाई देंगे. But there was only silence. लेकिन वहाँ सिर्फ खामोशी थी. In the journal beside the painting, written in fading ink, was one final entry. तस्वीर के पास पड़ी डायरी में धुंधली स्याही से एक आखिरी जुमला लिखा था. She returns when the time is right to finish what was begun. The legacy must not vanish. वो वक्त आने पर वापस आती है ताकि जो शुरू किया गया था उसे मुकम्मल कर सके. ये विरासत ख़त्म नहीं होनी चाहिए. Clara felt a trace of understanding settle into her bones. Clara ने एक अजीब सी समझदारी को अपने वजूद में उतरते हुए महसूस किया. She had not simply inherited a house. She had inherited a purpose. इसे सिर्फ एक हवेली विरासत में नहीं मिली थी, बल्कि एक मकसद भी. From that day forward, Hollowmore Hall came alive once more. इस दिन के बाद से Hollowmore Hall दोबारा जिंदा हो गया. Clara restored the paintings, opened its doors to the world, and spent her nights studying Evangeline's works, learning to decipher the secret messages within the brushstrokes. Clara ने तस्वीरों की बहाली की, हवेली के दरवाजे दुनिया के लिए खुले और रातें इवांजेलिन के फन पारों को पढ़ते हुए गुजारें ताकि उनमें छुपे राजों को समझ सके. But every so often, when the wind howled and the candlelight danced strangely, she would glance at Lady Evangeline's portrait and whisper, लेकिन कभी कभार जब हुआ जोर से चलती और मोमबत्ती की रोशनी अजीब तरह से लर्जती, वो लेडी एवांजेलिन की तस्वीर की तरफ देखती और सरगोशी करती. I understand now. अब मैं समझ गई हूँ. And the eyes in the portrait would seem to smile. और तस्वीर की आंखें जैसे मुस्कुरा उठते हैं. अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो अब कहानी दोबारा सुनें, इस बार सिर्फ अंग्रेजी में. देखें आप कितना समझते हैं. मगर इससे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. Long ago, nestled in the misty hills of Devonshire, stood an ancient estate known as Hollowmore Hall. Time had chipped away at its glory, leaving behind cracked corridors, faded rugs, and the scent of old wood. The villagers whispered tales of strange happenings in the mansion, but none dared venture close, except for one. Clara Moreau, a curious art history student, had inherited Hollowmore Hall from a distant ancestor she had never met. Her professors encouraged her to unravel its mysteries, especially since the estate housed a collection of rare paintings, some believed to be lost to time. Upon arriving, Clara felt an eerie stillness in the air. Each corridor echoed her steps like distant whispers. The grand foyer was decorated with portraits, men and women in stiff clothing, their expressions frozen forever. But one portrait caught her eye, a young woman with piercing eyes that seemed to follow Clara as she moved. The nameplate read, Lady Evangeline Moreau, 1834. There was something peculiar about the painting. The colors were too vivid for its age, the eyes almost alive. And what troubled Clara most was this. Lady Evangeline looked exactly like her. Night fell fast at Hollowmore. Candles flickered in the drafty halls. Clara stayed up studying old letters and documents she had found in a concealed drawer behind the library shelves. They told of Evangeline, a woman shunned for her beliefs, an artist, a scholar, and perhaps something more. As midnight approached, Clara heard a faint knock, not on the door, but behind the painting. With her heart pounding, she removed the portrait from the wall. A silhouette of a door was etched into the wall behind it. She pushed gently. It creaked open to reveal a hidden staircase spiraling downward. Each step echoed as she descended into a forgotten cellar, filled with dust, canvases, and journals. One canvas stood alone, covered by a tattered sheet. Clara pulled it off. It was another portrait. Unfinished, the face was hers. Suddenly, the air grew cold. The flicker of her candle dimmed. She turned, expecting to see shadows, but there was only silence. In the journal beside the painting, written in fading ink,
was one final entry. She returns when the time is right to finish what was begun. The legacy must not vanish. Clara felt a trace of understanding settle into her bones. She had not simply inherited a house. She had inherited a purpose. From that day forward, Hollowmore Hall came alive once more. Clara restored the paintings, opened its doors to the world, and spent her nights studying Evangeline's works, learning to decipher the secret messages within the brushstrokes. But every so often, when the wind howled and the candlelight danced strangely, she would glance at Lady Evangeline's portrait and whisper, "I understand now." And the eyes in the portrait would seem to smile. आज की कहानी से आपने कौन सा इंग्लिश लफ्ज़ सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया कि आप अभी तक हमारे साथ हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।